Okay boys, in this video we will do stylistic breakdown of this fight, Chungren Koren versus Ryo Tajima. So let's fucking go in a peaceful way. It's an interesting fight and I think you guys will be a little disappointed after this breakdown. See, I'm really scared. Like हम लोग step by step सारे skills को break down करेंगे. Let's talk about Koren striking first. Okay, he has really good left hooks जो lunging left hooks land करता है. Go watch MFN. You'll understand कि कितने सही तरीके से वो left hook land करता है. That's how he knocked him down as well in Road to UFC fight में भी. Dangerous at brawl. He can bite down his mouthpiece and he can he can go like this. And this is the normally क्या होता है brawl fighter का. Look at Justin Gaethje make that fight fist fight against Ilia Topuria. Guys, मैंने अपना बाल वाल ऐसे एनालिसिस वाले वीडियो में अपने नहा के बैठता हूँ just because मुझे गुस्सा ना आ जाए, so I'm very calm and chill. That's why I talk like this when I do this kind of prediction. Leg kicks spam करता है, leg kicks open stance से, open stance से क्या बोल रहा हूँ, outside leg kick, inside leg kick, good leg kicks. I don't see a lot of body kicks from him, but leg kicks, yeah. Normally pressure अच्छा है, like he will always on your face, keep on pressuring you, तुमको हमेशा फील कराएगा इनसाइड. अब जब भी वो ऑक्टोगन के अंदर में रहेगा, गो वॉच अंगद बिस्ट वाली फाइट, यू विल अंडरस्टैंड कि कितना वो उसको प्रेशर करता है. लैंडिंग एट हिज विल, आई एम सेइंग, एंड डेविस्टेटिंग क्लिंच में व्हाट यू कॉल इट, नीज. यू विल सी अ लॉट ऑफ नीज इन द क्लिंच बाय कोरेन. आई एम सॉरी, मेरे को थोड़ा प्रोनाउंस करने नहीं आता नेम, सो दैट्स व्हाई आई फक्ड इट अप एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई से इट. एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू तजीमा स्ट्राइकिंग. नाउ दिस गाय हैज सम pretty hands, I'll say, like very beautiful hands, very fast, very pretty, like बहुत अच्छा. Like clean combination he land, he always feint, मतलब ज़्यादा overthrow नहीं करता, he feints a lot, he'll do like this, he feints a lot, जो कि react कराता है fighter को. Clean precise striking in the combination, volume में punches throw करता है, but effective volume, not just volume, like he'll go ऐसा, इस तरीके का पंचेस थ्रो करता है. एंड एक्सीलेंट इन एंड आउट मूवमेंट. इफ यू विल गो एंड वॉच फाइट अगेंस्ट, जिसमें रोड टू यूएफसी में इसने फाइट करा था, ही वाज वेरी गुड. टाई नाम था उसका, टाई बोलते हैं उसको. द मोमेंट ही वाज फेंटिंग एंड गोइंग विद द राइट हैंड, वो हमेशा आउट ऑफ रेंज हो जा रहा था. एंड ही गॉट दैट डेंजरस राइट हैंड, जो कि आई एम मच मोर कंसर्न्ड. इससे ज्यादा राइट हैंड से ज्यादा स्ट्राइकिंग में आई एम नॉट कंसर्न्ड. ही हैज अ क्लीन स्ट्रेट राइट हैंड डाउन द पाइप. You will see why I'm saying it, Next we will talk Koren's striking flaws. Sloppy striking, very sloppy. He's there to hit, like anybody can, counter strike कर सकता है उसको. Like he's there, like he's very flat footed. He don't move too much. He try to walk you down, he'll take one shot to land his one. And why not? He has a good power as well in his hands, but you cannot, walk somebody down like क्या नाम है उसका यार, Japan है. Okay, peace brother, peace, Flash, please, peace. Okay, he overextend with the hooks. जाके देखो, इसका एक flaw भी है कि when he throws lunging, like overextend, and he's there to counter. Like anybody can land counter. जो भी counter striker होगा, he can land counter. And the guy जो कि what do you call it, जो हम लोग compare करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे कि why I feel like this is the लीव ओपनिंग जब भी ओवर कमिट करता है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड लाइक ही इज वेरी हिटेबल. लेट्स टॉक अबाउट क्या नाम है, तामी समथिंग, व्हाट द फक दिस गाय, ताजीमा स्ट्राइकिंग. ओके, ही इज ओपन इन द पॉकेट. व्हेन ही थ्रो इनसाइड द पॉकेट, ही डोंट बाइट डाउन द माउथ पीस एंड थ्रो. ही थ्रो लाइक दिस एंड देन हाथ ड्रॉप हो जाता है. देन एनीबडी कैन लैंड ऑन हिम इन द पॉकेट. Leg kick, anybody can land. Leg kick is there, like anybody can land leg kick on him. बहुत ज़्यादा what do you call it, feet आगे करके बहुत square stance से लड़ता है. Like he has a good judo, but yeah man, I mean I didn't saw a lot of judo from him, but I don't know. Leg kick पर land कर सकता है. And what do you call it, overhand right से तुम इसको catch कर सकते हो. Go watch Tai, like he landed 2-3 overhand right on him, defensive gap in the exchange, yeah, like so बहुत ज़्यादा guard open रखता है in the pocket. You can understand that shit. Okay, moving on to the comparison. This is interesting. See, striking advantage है तजीमा के पास में. Good fast, really fast hand, it will be like combination striker है, that can give a problem to Koren. Combination striker. This fight will be more like on feet. Ravindra Dhant versus Koren.
जाके रविंद्र धान को देखो, वो कॉम्बिनेशन जब भी थ्रो करता है, ही वाज लैंडिंग ऑन कोरेन. सो आई फील सो इन दैट एस्पेक्ट कि ऐसा फाइट जा सकता है. यू नो, कोरेन कैन लैंड राइट हैंड इन द पॉकेट, ओवर हैंड जो हुक्स लैंड कर सकता है, मीडी हुक्स, बैंग हुक्स, लंजिंग लेफ्ट हुक्स लैंड कर सकता है द वे ही लैंडेड. बट उसका जो इन एंड आउट मूवमेंट है, मेरे को लगता है कोरेन को प्रॉब्लम देगा, बिकॉज बहुत स्मूथली करता है. यू कैन गो एंड वॉच मैन, like he has like a really good in and out movement, out of the range, बहुत जल्दी फ्लो करता है, and then he like void के आसपास रहता है, and the moment he you go out, he you know एकदम बहुत अच्छे से डिस्टेंस मैनेज करता है. I feel like that, but he's hittable inside the pocket. That's what I inside. Body shot, heavy hooks land कर सकता है, and that's I think in striking, I think Koren should not strike with this guy. He's really skilled on the feet, polished. I'll say that. Like he has some flaws, but he's polished. Let's talk about the wrestling. Koren pro in wrestling, ground and pound, elbows really good. You know, good trip. जाके देखना, he has a good trip, like inside trip, and then he sweep the leg out of opponent. वो भी सही करता है, जिस तरीके से last fight में उसको take down करके choke लगाया था. Go watch that, you'll understand. Good clinch work, you know, nice knees when he is in the clinch. Very overwhelming presence when he goes on the ground. He will continuously, try to do something. बट इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आता है, जो कि हम लोग कौन से बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट ताजिमा रेसलिंग. ही हैज अ गुड सिंगल लेग, गुड लेवल चेंज. सी, he don't initiate the what do you call it, wrestling from बहुत दूर से, but the moment you will go inside the void, if you're trying to throw something, he'll change the level. That's the IQ part, I guess, rather than wrestling. But I still consider smooth ground transition, a good sprawl, smooth ground by transition. I mean, like if you'll do something, agar overwhelming nahi ho to, then he will smoothly, he'll transition from back mount to side mount. He can do like really good flows, and he sprawls good. If you'll shoot telegraph takedown, then he sprawls, like he has like really good, so that he can sprawl. You know what I'm saying? My आवाज आ रही है ना, बैंडी फुदी, नहीं तो भाई रिकॉर्डिंग की माँ बहन हो जानी है. Okay, let it be. जो भी है भाई, it's okay. Flash, calm the fuck down, buddy. Okay, let's talk about Koren's wrestling cons. See, What the fuck I just did, bro? I put this. अच्छा, इसका मैंने गलती से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया. Okay. What the hell? Okay. I'm gonna tell you ऐसे anyway. See, Koren has a problem कि जब भी उसको कोई ग्राउंड पे लेके जाता है, जब भी वो ग्राउंड पे जाता है, he don't put hooks. He don't try to control people in a way कि कि थोड़ा सा मैं अपना बेस बना लूं. He'll go directly, very aggressive. Like he's too aggressive on the ground. He's too much aggressive, and I think that's a con. जिस तरीके का स्क्रैम्बलिंग एबिलिटी है इस बंदे के पास में, आई थिंक दिस विल गिव हिम द प्रॉब्लम. क्योंकि अगर तुम उसको कंट्रोल करके ग्राउंड एंड पाउंड करेगा, तो मे बी he'll stuck under you. But this is the major problem in Koren's wrestling. I feel that way कि वो कंट्रोल नहीं करना था. He'll try to smash you, he'll keep on pounding like this. But he'll not control कि ठीक है, पहले मैं wrist control करता हूँ, then I'll land ground and pound, और hooks. जब तुम ग्राउंड पे लेके जाता हूँ, I'm gonna put hooks inside. See, go watch इसका जो fight हुआ था, and then you understand that he choked him out. Yes, but if you'll go and watch, then he didn't put the choke hooks in to flat him out. अगर कोई बंदा अगर hurt नहीं होता, then he would have escaped. और अगर बहुत elite wrestler होता तो, because if you cannot put your hook inside, then you are giving space to move side to side. तो वो choke का pressure कम करता है. It will give you little bit oxygen जो pass कर सकता है. So I feel that way. That's the Koren's cons. Tajima's wrestling, I feel that way. Lose position in the scrambling. हमेशा scramble में position lose करता है. May struggle under heavy pressure, and this is the part जहां पे मेरे को लगता है कि कोरेन को जीत मिल सकता है इस फाइट में. कि कोरेन इज अ फाइटर जो कि अपना प्रेजेंस दिखाता है इनसाइड द ऑक्टागन. ही विल लाइक हमेशा तुम्हारे फेस के सामने रहेगा कि लाइक यू आर फाइटिंग समबडी, यू विल नॉट हैव दैट ब्रीथिंग स्पेस. Like he will always on your face, and I think तुमको हमेशा बैक ऑक्टागन के साइड में करके बैक साइड में रहेगा. That's the thing I feel like कि तजीमा के अंदर रेसलिंग में कोरेन उसको ये कर सकता है. Overwhelming, aggressive, अगर रेसलिंग पे रहता है, then he'll get overwhelmed by that. Go what टाई वाला फाइट में the moment he took him down, and जैसे ही करके टाई ने उसको रिवर्स करा, and he was started landing ground and pound, he got panic and overwhelmed, and he pulled the guard. So I feel that way, and I think Koren का physicality बहुत मैटर करता है, जो कि हम लोग आगे बात कर रहे हैं. Let's compare the fucking wrestling, buddy. Okay, Koren's pressure and physicality matters इस फाइट में. I think Koren overwhelm कर सकता है तजीमा को अपने wrestling और wrestling pressure से. I feel that way.
जब ओवर एक्सटेंड करके कोरेन अगर जाता है देन तजीमा हैज अ चांस कि वो लेवल चेंज करके टेक डाउन के लिए जाए, बट आई डोंट थिंक सो ही शुड डू दैट बिकॉज कोरेन इज लाइक मच सुपीरियर रेसलर ऑन द ग्राउंड, आई विल से, एज कंपेयर टू तजीमा. So yeah, this is the what you call it comparison. Let's talk about key to victory. Pressure, pressure, pressure. There is no fucking way Koren can beat this man on the fucking feet. There is no fucking way. If you'll not put the pressure, you cannot allow him to dictate the range. You cannot. At no cost you can do that. At no fucking cost. You have to go like uske face ke aage and then you'll be like, this is my fucking fight and I am going to knock you out. This kind of mentality, I think कोरेन को रखना पड़ेगा. That's how he'll make the dog fight on the ground, on the feet, anywhere. Like just don't give him the breathing space. You cannot give him the breathing space, and I think this guy will melt. I can see that. You know, use your chain wrestling continuously. Don't give up and use your cardio as your weapon. I feel like कार्डियो मेरे को दोनों में से ज्यादा किसी का भी बहुत बढ़िया नहीं लगा है. कोरेन ऑल्सो गैस आउट कर सकता है इन दिस फाइट. आई फील द वे, यू नो. तजीमा का व्हाट यू कॉल इट, बट एक चीज ये है कि टेक्निकल रहो. या ये मैंने पॉइंटर डाला इसलिए है बिकॉज व्हेन यू गो ओवर अग्रेसिव यू डोंट ट्राई टू पुट योर हुक्स इन एंड ट्राई टू कंट्रोल एंड ट्राई टू पुट हिम अंडर यू, देन ही विल escape because he has the scrambling ability to do so. So you have to understand that shit as well. Tajima's key to victory, in and out movement, easy peasy, you know, hapa and then back and then he'll try to land with the range and जैसे वो अंदर आएगा because I think he has a reach advantage. I didn't saw reach advantage. Chat मेरे को comment करके बताना कि who got the reach advantage. He had the clean combination and I can see him finishing Koren with the clean combination as well. I'll say why because go watch क्या नाम है उसका यार, धांत fight. धांत हमेशा combination उसके ऊपर land कर पाता. That's how he finished him as well. So clean combination. Koren has a chin but he cannot take a lot of clean punches from this guy because he has like fucking good speed, like a really crazy ass speed. I'll say that. You know, डोंट गेट इनटू ब्रॉल, मतलब कहीं भी बार फाइट फिस्ट फाइट के चक्कर में मत पड़ो. यू कैन नॉट डू दैट क्योंकि कोरेन के पास में उसका ऑलरेडी एज है. आफ्टर दिस आई एम गोना टेल यू दिस इज नॉट द इजी पिक फॉर मी. आई हैव बीन थिंकिंग इसको कि किसको पिक करना है. मैं बहुत डाइसी हूं उतना टाइम से बिकॉज ऑब्वियसली माई बॉय इंडियन बॉय इज फाइटिंग. सो I have to, you know, think थोड़ा सा rational होके भी कि जब if I am doing analytical video, so I am going to pick Tajima to win by TKO. Don't get me wrong, Koren has a good chance to beat Tajima on the ground, to be very honest. Like he is very beatable. I can see, like I can imagine him beating Tajima on the ground by overwhelming, but with like important ये भी है कि किस तरीके का कोरेन आएगा, you know, like physically कितना होगा, कितना अपने आप को पेस कर सकता है. And I think I cannot trust इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट में ब्रॉल वाला सिचुएशन, लाइक दिस इज द स्टाइल ऑफ फाइटिंग जो कि वो रिप्रेजेंट करता है. आई थिंक अगर उस तरीके का फाइटिंग अगर इसको बहुत ज्यादा ओवरवेल्म कर देता है देन ही कैन फिनिश हिम. He can TKO him on the ground by elbow or you know on the feet as well, which I think it's really tough to finish him on the feet. पर because this guy got good chin, so I think on the ground TKO कर सकता है कोरेन. पर I cannot trust the thing. Koren has tendency कि वो brawl करने निकल जाता है. And I think if you'll do brawl, then this Tajima guy has a good slick in and out movement, so that he will and खुद का wrestling भी सही है कि he will scramble out of your takedown, and then he'll back to the feet and then he'll start doing distance manage करके he'll try to win on a point. I think he'll knock him out, TKO him and win by decision, because I can see him landing clean combination on जब Koren walk him down करता है, then he'll try to land combination and then he'll TKO him, like maybe standing TKO or lit, Koren took a lot of damage and referee stepped in and then he called off the fight. I think so, brother. That's how I feel this fight goes. मैंने बहुत बारी सोचा, बहुत तरीके से सोचा, but this is how I felt in a way. But I am not counting out Koren in this fight because he has a great chance to win. I will say I'm picking 55 this guy. मतलब इतना का मार्जिन है, if Koren has थोड़ा सा भी adjustment करके आएगा, that he'll not go brawling on the ground or on the feet. I think it's an easy match for Koren, bro. It's an easy match for Koren just because he's too good on the ground. Too good, and he अगर overwhelming pressure डालेगा then he'll stuck on the ground. Trust me, trust my words, bro. I saw a lot of tape. This guy will stuck on the ground if Koren will play a little bit safer and not letting him go when the fight goes on the ground. If he will, then
you know my pick. What do you guys really think? मेरे को comment करके बताना. And this is the stylistic breakdown of Chungren Koren versus Ryo Tajima. मिलते हैं next video में. Peace out. Flash is fast as fuck, boy.